use tooltip in CSS. You can also use the title attribute with any element to use the tooltip, but that is the HTML part. But I am explaining this thing with the help of CSS. Okay, for that we will use visibility property. With this visible property, we can use this tooltip. Okay, so first write HTML, then header section, tooltip in CSS using visibility property. Head close. Body part. Now I am defining E. Class is 1. Hello. Hi. Paragraph close. Body close. HTML close. Okay. हमें करना क्या है इस प्रोग्राम के अंदर? देखिए जब हम अब ना इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हमारे ब्राउजर पे स्क्रीन पे हेलो हाई विजिबल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये हाई विजिबल ना हो, सिर्फ हेलो विजिबल हो। और जैसे ही मेरा माउस का कर्सर इस हेलो के ऊपर होवर करे तो ये हाई एज अ टूल टिप और एज अ पॉपअप अपीयर हो जाए। दिस थिंग आई वांट। So how could we do this? Because when we run, this high will always appear. Now we have to do something out of league. ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। And in HTML basically provide a customized tag. That is, name of that tag is span tag. So we will use here that span tag. Okay, I'm just defining span class is equal to 2, and after high I'm just closing this span tag. Right now if I run this program again, the same output will appear, hello hi. Now we have to do something so that this hi will disappear. For that, come to this CSS part. Okay, now this hi and hello both belongs to paragraph class 1, but this hi belongs to paragraph class 1 but also to class span tag class 2, and this class 2 belongs to class 1. So I am writing here dot 1 space dot 2. It means हम जो CSS लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं कि डॉट 1 के अंदर जो डॉट 2 है उसके लिए, और डॉट 1 क्या है? हमारा पैराग्राफ है, एंड डॉट 2 जो है वो क्या है? हमारा स्पैन टैग है। यानी कि एक पैराग्राफ है जिसके अंदर क्लास है, उसके बाद स्पैन टैग है जिसके अंदर हाई है। तो हम हाई के लिए हम CSS चेंज कर रहे हैं, ना कि हेलो के लिए। तो सिंपल सा हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, हमने विजिबिलिटी कर दी हिडन। अब ये विजिबिलिटी हिडन दैट मीन्स
अब जब मैं ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमको सिर्फ हेलो दिखाई देगा, हाय डिसअपियर हो जाएगा, ये नहीं विजिबल होगा, दिस हेलो ही सिर्फ विजिबल होगा। बट अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा माउस का कर्सर हेलो के ऊपर होवर करे, यानी कि इस क्लास 1 जो हमने बनाई है इसके ऊपर होवर करे, तो हमारा जो क्लास 2 है वो अपीयर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डॉट 1 दैट इज आर क्लास, इस पर लगा रहे हैं होवर इवेंट, इसके लिए और क्लास 2 that we now use visibility visible। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा माउस का कर्सर क्लास 2 यानी कि हेलो के ऊपर होवर होगा, तो ये जो विजिबल किया है हमने हाई को, वो आ जाएगा एज अ पॉपअप, और यू कैन से एज अ टूल टिप, और विजिबल हो जाएगा।